Good afternoon to the students of 7th standard. Today I bring before you a short play, a short drama called Abdul Becomes a Courtier. Courtier means a military personnel of a king, the individual who is appointed uh, in order to give the security to the ruler or king. That is called courtier, and it's a very reputed post. It's very this officer is very well honored in any kingdom. So lesson number 2.3, Abdul becomes a courtier. So let's begin with the first scene. Father, who is a school master, is getting ready to go to school. Mind you, this story is taken from the ancient time. The stories belong to the ancient period. So here, the first character of the story, father, who is a schoolmaster and getting ready for the school. By the way, his son Abdul, very intelligent boy, always seeking for knowledge. He is aspiring the knowledge. जो बेटा जो था अब्दुल नाम का बड़ा होशियार था और हमेशा उसका प्रयास था कि नए नए बुक्स को पढ़ा जाए, अपना नॉलेज जो है बढ़ाया जाए, नई नई चीज़ों को लर्न किया जाए. He requested his father to bring some literary books, like great books and manuscripts is mentioned in the text. तो उसने अपने फादर से कुछ बुक्स मंगाई. फादर ने कहा कि थोड़ी सी पैसे की अभी किल्लत है, पिछले महीने की जो सैलरी है वो आधे महीने में ही ख़त्म हो गई है. ठीक है, मैं बुक्स लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये बुक्स जो है मिलना बहुत मुश्किल है. दे आर ट्रेजर एंड रेयर एंड एक्सपेंसिव ऑल्सो, एक्सक्लूसिव ऑल्सो. It is hard to get. So he said that from my school I'll look after. From my school I'll try to borrow books that will take you to brighter tomorrow. मैं देखता हूँ कि मेरे स्कूल में कुछ अगर बुक्स होंगे तो मैं लाता हूँ. I will try to borrow books that will take you to brighter tomorrow. In this drama, you'll go through some rhyming words. Yeah, borrow, tomorrow, expensive, exclusive. Okay, so underline such rhyming pairs, rhyming words. Abdul was very happy. So he said, that will be great. How eagerly I wait. So in the evening, when father comes back, very eagerly Abdul asked him. But father said, so sorry, couldn't lay my hands on even one. मैं आपके लिए बुक नहीं ला पाया. अब्दुल became very sad and dejected and बहुत दुखी हुआ बेचारा कि मैं कब बुक पढ़ पाऊँगा, कब मुझे बुक पढ़ने मिलेगा. And really it's difficult to be educated now without books. He had an idea. In the last line you can see what idea he applied. An idea then crosses his mind: to serve the rich and get paid in kind. अगर किसी रईस की अगर सेवा की जाए या किसी रईस के घर में काम किया जाए तो निश्चित ही उसका कुछ ना कुछ एक जो मेहनतना है या कुछ ना कुछ जो उसका जो एक सैलरी है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ यूज़फुल चीज़ें उस काम के बदले में मिल जाएंगी, ऐसा विश्वास था अब्दुल का. So let's find out the second scene. Second scene में before that you go through the difficult words. Erudition, scarce,
and in kind. Go through these words. Erudition, that is learning, scholarly work. Second scene, Abdul approaches a rich merchant. अब्दुल रिच मर्चेंट के पास पहुंचता है, काम मांगता है, एंड रिच मर्चेंट उससे पूछता है कि बदले में आपको क्या चाहिए. आई एम पुअर स्टूडेंट, गिव मी अ चांस टू सर्व, ऑब्जर्व माई वर्क, पे ओनली दैट आई डिज़र्व. ओके, पे ओनली दैट आई डिज़र्व. तो उसे क्या मांगता है? वो बुक्स मांगता है. एंड he worked very honestly there, and the merchant became very pleased with his work, and he demanded some books, and he got it also from the merchant. May I now read the books in your store, quench my thirst for knowledge? I need nothing more. बुक्स के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. तो ड्रामा में एक एलिमेंट है कोरस, ग्रुप सिंगर्स. वो वहाँ पर आते हैं और गाना गाते हैं अब्दुल की प्रशंसा में. तो क्या गाना है उनका? डेज पास्ड बाय, ही लर्नड एंड लर्नड, गेनिंग द नॉलेज फॉर विच ही yearned, philosophy, astronomy, Arabic and Persian. Abdul the scholar now is one in the million. Will he come to the emperor's notice? Will he be given an honorable office? Notice office. तो कोरस क्या कहते हैं? कोरस said that for many years Abdul read the books, many topics, many subjects, philosophy, astronomy, Persian language, Arabic language, and became scholar. So the question is asked here, will it be noticed by emperor? Will he get the honorable post? That is a question asked by chorus. And there comes news for Abdul. Emperor has answered your prayer. The royal मुर्गी खाना is now under your care. तो सबसे पहला जॉब उसे कौन सा मिला? मुर्गी खाने का ख्याल रखना, मुर्गी खाने को, राजा का जो मुर्गी खाना था उसकी केयर करना, उसकी देखभाल करना. और बड़े हैप्पीली उसने ये जॉब एक्सेप्ट किया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ के, एक अच्छा चांस समझ के. लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंड. गो थ्रू द डिफिकल्ट वर्ड्स हियर. कोरस कहते हैं, अब्दुल वर्कड विद कन्विक्शन, zeal and passion. The hens were given a new kind of ration. The birds seemed to be in the pink of health, but nothing was spent from emperor's wealth. So he looked after the murgi khana, he looked after the hens, cocks over there very well without spending any money. And for this work, he got good appreciation from the king. King asked, a lot of money used to be spent on this murgi khana. But now, from many days, nothing was spent. Whose credit? It was credited to, of course, Abdul, who took care of murgi khana very well. And he got the second job. Of course, he wanted to become a courtier. But in the second attempt, he did not become the courtier. In fact, he got the job of looking after the library. But before that, let's see what did he explain about the murgi khana. Jahapana, your humble servant feeds them well, but only scraps and shells and kitchen waste, that's enough for hens. तो ये कैसे किया सब उसने, कैसे मुर्गी खाने को उसने केयर किया? तो उसने कौन सा खाना खिलाया? तो रॉयल दरबार के जो रसोई थे, जो रसोई खाने में जो खाना पकता था, वो खाना जो वेस्ट जाता था या
जो वेजिटेबल्स के जो छिलके रहते थे या जो भी खाने से जो भी वेस्ट मिलता था, वो वेस्ट खाना उसने यूटिलाइज किया, दिया इन हैंड्स को, और उसकी वजह से कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी राजा को. सो इट्स रियली द वेस्ट मटेरियल ही यूज्ड एंड विद अ गुड आउटपुट, एक अच्छा आउटपुट उससे मिला, एंड देन that's why he was successful in his drive. Drive means here mission. Yeah, he was successful in his mission so far. Interesting young man, you seem to have great brains. राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने उसे दूसरा जॉब दे दिया, टू लुक आफ्टर द लाइब्रेरी, और उसमें भी ये बड़ा सक्सेस हुआ. और सक्सेस उसे कैसे मिला, क्या अच्छा काम किया उसने. सो ऑल दीज बुक्स वर कवर्ड विद सिल्क्स, ब्रोकेट्स एंड वेलवेट्स. जो बुक्स बैड कंडीशन में थे उससे उसने कवर किया, वेलवेट के साथ, वेलवेट का कवर लगाया, सिल्क का कवर लगाया. लेकिन राजा को लगा कि इसके लिए इसने पैसा खर्चा किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था. आपको पता है कि राजा को बहुत सारे मैसेज आते हैं और राजा के लिए बहुत सारे खलीते आते हैं, बहुत सारे कार्ड्स आते हैं. तो उस ज़माने में जो मैसेज आते थे वो अच्छे महंगे कपड़ों के ऊपर वो मैसेज आते थे, वेलवेट के ऊपर आते थे. तो ये पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें, ये सारे जो वेलवेट्स, ये जो वैल्यूबल कपड़े थे, ये फेंके जाते थे. It was used to be thrown away outside, and those things were collected by this Abdul, and he cared them and gave them to the tailor of the king, and he prepared those covers for the library books. My goodness, and by seeing his intelligence, what did Raja said, what this king said? Oh, you have great merit. Merit means intelligence. I had realized much earlier. I am happy to announce, now you are my courtier. And in this way, the ultimate dream of Abdul became real, and he became the courtier. Yeah, the king was pleased, and here the chorus sang a song in his appreciation. Wits, brains, and perseverance. Perseverance means patience, great willpower, helped Abdul achieve his aim. Patience, determination won him great name and fame. और अच्छा काम किया, अच्छा हार्डवर्क किया, अच्छी मेहनत की, और ये व्यक्ति बहुत ही फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया, अच्छा मान सम्मान इसे मिला, अच्छा रिवॉर्ड मिला राजा से. एंड दिस वे Abdul did a great thing. So, this story is adapted from the story Enter Maula do Paisa by Pratibha Nath. So, go through the difficult words here, given in the textbook already, and in the second part, we will see all the question answers. Till then, complete your homework, writing the meaning in your notebook. Thank you so much. Bye for now.